start part 5 of determinant, and it is the last part. We read about property of determinant. In the last video, we know about the fourth property of determinant. First property. We revise the properties 1 to 4. Last we start the first property. First property of the determinant is tell about if we change the row and the column of a determinant, yeah, we transpose a determinant, then the value of determinant is equal to, if we given that a determinant A, then determinant value of determinant A is equals to value of determinant A transpose. It means किसी भी determinant की value उसकी transpose की value के equal होते, there is no change. हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसको डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं और ट्रांसपोज करके भी एक्सपेंड कर सकते हैं. देयर इज नो चेंजेस इन द वैल्यू. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ डिटरमिनेंट. सेकंड प्रॉपर्टी इज टेल अबाउट व्हेन वी चेंज द रो R1 is interchanged to R2 या C1 is interchanged to C2 at one time. मीन्स किसी भी डिटरमिनेंट की जब हम वन रो को अदर रो से इंटरचेंज करते हैं, then the value of determinant is not change but the sign of value is change. मीन्स डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है लेकिन साइन चेंज हो जाता है. इफ वी यूज द वन टाइम ऑफ दिस ऑपरेशन, R1 को R2 से इंटरचेंज किया हुआ है, it means we given that determinant A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. This is the determinant of order 3 into 3. When first we interchange the row R1 and R2, means R1 को R2 से रिप्लेस करेंगे तो वन टाइम नेगेटिव साइन आएगा माइनस साइन, एंड अगेन वी इंटरचेंज R2 R3. जब R2 को R3 से चेंज करेंगे we get again a negative sign, then minus and minus is plus. Similarly interchange its column, means हम इसके कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं. This is the C1 and this is the C2. C1 को C2 से कन्वर्ट करें या C1 को C3 से इंटरचेंज करें. When we interchange one time, जब वन टाइम इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन एंड सेकंड टाइम इंटरचेंज करेंगे तो पॉजिटिव साइन. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट. एंड थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इज टेल अबाउट दैट if the all element of a determinant of any row and any column is zero, means किसी भी डिटरमिनेंट की किसी भी रो और कॉलम के एलिमेंट जीरो हो, इट मींस 0 0 0 2 3 4 x y z. This is the determinant of order 3 into 3, then its value is 0. means किसी भी डिटरमिनेंट की किसी रो के या एलिमेंट के एलिमेंट जीरो हो, then the value of determinant is 0. This property is very important property and most of we use this property in the finding the value of determinant. means determinant की value find करने के लिए ये सबसे important property है. most of अपना target यही होता है कि determinant में कोई भी रो हो कॉलम हो उसके किसी रो कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो में कन्वर्ट करना है. जीरो में कन्वर्ट हो जाए तो उसी रो से अपने को एक्सपेंड करना जिसमें मैक्सिमम जीरो मिले. इफ द ऑल एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो, ऑल द एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट जीरो, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो. दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी. एंड फोर्थ प्रॉपर्टी वी नो अबाउट इन एनी डिटरमिनेंट इफ एनी टू रो और टू कॉलम्स एलिमेंट आर इक्वल, मींस किसी भी डिटरमिनेंट की टू रो के या टू कॉलम के एलिमेंट सेम हो, इक्वल हो,
then the value of determinant is 0. It means we given that the determinant of order 3 into 3 x, y, z, p, q, r, x, y, z. This is the determinant of order 3 into 3. Find the value of determinant. We don't expand the determinant. Means determinant को expand नहीं करना है. By using the property, means property use करके इसको अपने को solve करना है. We know about this is the first row and this is the third row. The element of the first row and element of the third row are equal. Then we apply the property number 4th. The fourth property is tell about if the element of two row or two column is equal, then the value of determinant is 0. It means the value of this determinant is 0. We solve the determinant by using the elementary operation. It means R1 is changing R1 minus R3, or R3 is changing R3 minus R1. Means we apply the elementary operation in this determinant. First we apply this determinant or this determinant. Means हम वन टाइम या तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे या ये एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे. Then we get R1 is changing R1 minus R3 means R1 के एलिमेंट में से R3 के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है. Then x minus x 0, y minus y 0, z minus z 0. We use the property number 3rd in this case. These are the fourth basic property of the determinant. In this video, today we know the same other property of determinant. The property number 5th means fifth property जो है वो अपने को ये शो करती है. The property number 5th is tell about the determinant. मीन्स किसी भी डिटरमिनेंट को हम जब कांस्टेंट टर्म से मल्टीपल करते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म्स होती है वो या तो डिटरमिनेंट की किसी एक रो के एलिमेंट से एनी वन रो या किसी एक कॉलम एनी वन कॉलम के एलिमेंट से ही मल्टीपल होती है. इट मींस वी गिवन दैट डिटरमिनेंट del is a determinant and its element is a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3. This is a determinant. Means a determinant अपने को given that if we multiple the k means k से multiple किया जाए then we write k dot determinant is equal to, यानी कि लेफ्ट साइड को कैसे मल्टीपल किया है मींस डिटरमिनेंट को k टाइम्स से मल्टीपल किया हुआ है. तो इसके जो ऑल एलिमेंट होंगे ना वो कैसे मल्टीपल नहीं होंगे. या तो वन रो के एलिमेंट को मल्टीपल कर दो या वन कॉलम के एलिमेंट को मल्टीपल कर दो, बट डोंट वी मल्टीपल द ऑल रो और ऑल कॉलम. मींस सभी रो से और सभी कॉलम से मल्टीपल नहीं होंगे. द वैल्यू ऑफ k is not multiple the all element of the determinant. Means determinant के सारे एलिमेंट से मल्टीपल नहीं होंगे. It means we know about k a1, k a b1, k c1, but these elements are not changed. a2, a3, b2, b3, c2, c3. This is the value of the determinant. Similar, we change if we given that the determinant del equals to, अपने को determinant given that है del equals to k a, k b, k c, k x, k y, k z, k p, k q, k r. Then we take the common from this determinant. Means हम फर्स्ट रो के एलिमेंट से k कॉमन ले सकते हैं या सेकंड रो के एलिमेंट से k कॉमन ले सकते हैं, थर्ड एलिमेंट के रो कॉमन ले सकते हैं. Then we take del equals to k cube. Means one time is common from first row, second time is k from second row and third row. Similarly, we take common
y फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम है थर्ड कॉलम, एंड a b c x y z p q r. In this property, by using this property, we take any number is common from any row and any column. Means हम जब डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं तो इस प्रॉपर्टी के यूज से हम किसी भी जो मैक्सिमम नंबर अपने को रो में या कॉलम में कॉमन मिलता है उस नंबर को हम कॉमन लेके सोल्व कर सकते हैं. ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4. नेक्स्ट property number 6. Property number 6 is tell about the addition and subtraction of the determinant. Means हम determinant को add भी करते हैं, subtract भी करते हैं. Means we given that a determinant del. अपने को एक determinant del given that है जिसके एलिमेंट है a1 plus b1, a2 plus b2, a3 plus b3, b1, b2, b3, c1, c2, c3. This is the determinant of order 3 into 3 and the element of its first column is in the order of 2 terms. Means 2 terms का addition के form में है. Then we write this determinant in the addition of 2 determinant. मीन्स हम इस डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट उसी रो को या कॉलम को चेंज करना है जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन हो. उस रो में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा जिसके एलिमेंट में कुछ भी टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं है. इस डिटरमिनेंट को हम 2 डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. इट मींस दिस इज द इक्वल टू, वी राइट a1, a2, a3 and b1, b2, b3, c1, c2, c3 plus we add because the symbol is addition. Then we write d1, d2, d3, b1, b2, b3, c1, c2, c3. We know this type of the determinant means the element of the first column, then there's element are right in the first column and there's element are right in the first column of the second determinant. There's element are not change, these are same, these are no changes, these are the same. Similarly, given that other determinant, suppose that we given that determinant x plus y, y plus z, z plus x. Suppose we take a negative sign. This is the negative sign. P, Q, R, A, B, C. Then we write this determinant in the subtraction of 2 determinant. Means हम इस determinant को 2 determinant के subtraction के order में change कर सकते हैं. It means we write this determinant x, y and z, p, q, r and a, b, c minus, because the sign is negative, then we take negative sign y, z, x, means y, z, x and their element are same p, q, r, a, b, c. This property is an important property. By using this property, we reduce the terms of any row and any column. Means किसी भी रो के कॉलम और रो के जो एलिमेंट होते हैं जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन इस टाइप के साइन हो तो उनको हम 2 डिटरमिनेंट के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. When we subtract the determinant, जब हम डिटरमिनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, we don't subtract the element, means डिटरमिनेंट के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है. Only for we write x minus y, y minus z and z minus x. These elements are not subtracted and these elements are not added. Okay, we use this property in this cases. जब अपने को इस टाइप के डिटरमिनेंट गिवन दैट हो तो उस डिटरमिनेंट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए
या कुछ प्रूफ करने के लिए इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट property number 7. This is the sixth property of determinant, and now about the seventh property of the determinant. The seventh property of the determinant is the diagonal property. Means we know about the triangular matrix. First we read about triangular matrix. Triangular matrix is a matrix in which the element of which the leading diagonal is never be 0, but the upper element of the diagonal and lower element of the diagonal are zeros. Anyone's are zeros. The triangular matrix are two types. We given that the triangular matrix, suppose this is the triangular matrix x 0 0 y 0 2 3 4 z. The leading diagonal, this is the leading diagonal and their element are never be 0. इसके एलिमेंट कभी भी 0 नहीं होंगे, and the upper element of the diagonal are 0. means इस मैट्रिक्स के जो लीडिंग डायगोनल है उसके अपर एलिमेंट है वो 0 है, then it is the LTM, lower triangular matrix. Means that element are not 0, then this is the lower triangular matrix. Similar, we write this type of determinant x y z 0 0 0 2 3 4. This is the also triangular matrix. In this matrix the element of the leading diagonal is not equal to 0, but the element of the lower below the diagonal, means diagonal के below में जो element है वो 0 है and their element are not equal to 0, then this is the UTM. UTM means upper triangular matrix. जब upper वाले triangle के element 0 नहीं हो तब तो उसको UTM बोलोगे, जब नीचे वाले triangle के element 0 नहीं हो तो उसको हम LTM बोलेंगे. This is the lower triangular matrix and this is the upper triangular matrix. And we find the by using this property the value of the determinant. means इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की अपने को वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब अपने को कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन दैट हो ना, तो उस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चाहे वो एलटीएम हो या यूटीएम हो, दोनों की जो वैल्यू मिलेगी वो उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के मल्टीपल के इक्वल होगी. It means when we find the value of this determinant, the value of this determinant is x, y, z, the multiple of the leading diagonal. We find the value of this determinant, then x, y, z. This is the main important property. ये जो ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट होती है उनकी वैल्यू फाइंड करने की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. ओके, वी नाउ अबाउट है वी गिवन दैट determinant. अपने को डिटरमिनेंट गिवन दैट है कि 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Find the value of this determinant. This determinant, this is the I3. ये I3 है. मीन्स यूनिट मैट्रिक्स से जो डिटरमिनेंट मिली वो यूनिट डिटरमिनेंट होगी. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, then this is the upper triangular matrix and also lower triangular matrix. Then we know this is the unit matrix. The value of this determinant is I3 determinant equals to 1. means जो I3 एक यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 into 3. when we find the value of this determinant, जब हम इस determinant की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा. सिमिलर वी टेक एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कि V given that determinant, suppose this is the determinant 2 0 0 1 3 0 4 0 4 3 5. Find the value of this determinant. Okay, this is a determinant. We find the value of this determinant. This is a UTM.
This is the UTM is lower triangular matrix. These elements are not zero. These elements are not zero, but these are zero. The value of determinant is the multiple of the leading diagonal element. It means equal to 2 into 3 into 5. 5 3 is 15. 15 2 is 30. The value of this determinant is 30. Similarly, find the value of I2 1001. Then its value is 1. No change. This is simple. When the element of the leading diagonal is never be zero. Means triangular मैट्रिक्स में जो leading diagonal है उसके एलिमेंट जीरो नहीं होते हैं. उसकी जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो इनका मल्टीपल आएगा. We check by expanding the determinant. हम इस determinant को expand करके चेक करते हैं. When we expand the determinant by R1, जब हम इसको R1 से expand करेंगे, then 2 this column is shaded, this row is shaded, then we get 3 0 3 5 and 3 into 5 15, 3 into 0 0, then 2 into 15. The value of determinant is 30. Okay, by we use this property in the competition exam and objective question. Means हम objective question को solve करने के लिए या थोड़ा तेजी से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8. दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट. मींस द 8th property is tell about the factor of determinant. The 7th property is tell about related to triangular matrix. Okay, and the last property, when we given that a determinant of order 3 into 3, 1x and x square, 1a square, 1b square. This is an determinant of order 3 into 3. Means जो लास्ट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी अपने को ये शो करती है कि अगर हम x की जगह कोई एक ऐसा नंबर पुट करें जिससे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए. इफ वी पुट, जब हम ये पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू a, मींस इस डिटरमिनेंट में हम x की जगह a पुट कर देते हैं, देन वी गेट 1. वी पुट a and a, 1a square, 1a square, 1b square. मींस किसी डिटरमिनेंट में हम x की जगह a पुट करते हैं, कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं. इन दिस डिटरमिनेंट वी पुट x इक्वल टू a इन दिस डिटरमिनेंट एंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0. अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, बाय वी पुट x इक्वल टू a, देन वी गेट दिस रो एंड दिस रो इज इक्वल. देन यूजिंग प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी यूज करने से अपने उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी. सो that x minus a is the factor of the determinant. Means x minus a है तो वो इस determinant का क्या होगा? एक factor होगा. Similar we put x equal to b in the determinant. जब हम इस determinant में x की जगह b put करते हैं, then we get 1b square. Means 1b square, 1a square, 1b square. The element of the first row and the element of the third row are equal. Then by the using property the value of this determinant is 0. Means determinant की value 0 के equal आ जाए, then x equal to a and x minus b is the factor of determinant. Means x minus b जो है वो determinant का second factor होगा. This is the first factor and this is the second factor. Okay, in this property we use in the some questions. Means the questions को solve करेंगे तो हम इस property का use करेंगे. This is an important property. Okay, these are the main 8 important properties of the determinant. Means the properties are complete and the elementary operations are also complete. Now we solve the question of the exercise
4.2 मीन्स अपने को जो एक्सरसाइज 4.2 है उस 4.2 के ओनली क्वेश्चंस को सोल्व करना है. टॉपिक्स आर कंप्लीट. वी नाउ अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, elementary operation of the determinant, difference between the determinant and matrix, subdeterminant, minor and the factor of determinant. These are the 6 topic in this chapter. And now we solve the question of the determinant exercise 4.2. There are 7 8 question of the exercise 4.2. We given that first question of the determinant exercise 4.2 is if we given that a determinant question number 1, first question number 1 L M 2 3 equals to 0. If the value of this determinant is 0, then find L raised to M. Means L raised to M find करना. It is the very easy question. We multiply the element या expand the determinant. L is multiplied by 3, 2 is multiplied by M. Then we write 3L minus 2M equals to 0. 3L equals to 2M and L divided by M equals to 2 divided by 3, so that L raised to M equals to 2 raised to 3. The value of L raised to M equals to 2 raised to 3. Okay. Similar, it's question number 4. We given a other question number 2. In the second question, we given that a determinant 2, 3, 1, 3, 6, 8, 4, 5, 1. In this determinant, write the subdeterminant. Subdeterminant means minor of the determinant. Write the subdeterminant of the second row of this determinant. Means जो second row है ना R2, उस R2 के जितने भी सब एलिमेंट है उनके सब डिटर्मिनेंट लिखने अपने को. तो हम क्या यूज करेंगे? सब डिटर्मिनेंट ऑफ R2. मीन्स जो सेकंड रो है R2 उसके इस रो के जितने भी एलिमेंट है सेकंड रो उनके अपने को सब डिटर्मिनेंट लिखने. फर्स्ट भी राइट द सब डिटर्मिनेंट ऑफ एलिमेंट 3. वी यूज द R2. डोंट यूज द एनी साइन, ओनली फाइंड इट्स सब डिटर्मिनेंट. ओनली सब डिटर्मिनेंट ही फाइंड करने हैं. डोंट मल्टीपल द एलिमेंट and don't use the any sign. Subdeterminant of element 3 equals to, we shaded this row and this column, then we get 3, 4, 8, 9. And similarly find the subdeterminant of element 6. R2 के respect में find करना. Then second element 6. This row is shaded and this is column shaded. Then 2, 1, 4, 9. Similarly, find the subdeterminant of element 5. 5 के respect में जो subdeterminant मिलेगा we shaded this row and this column. Then write 2, 3, 1, 8. 2, 3, 1, 8. These are the minor of determinant. ये इस determinant के minor है. subdeterminant को हम minor कहते हैं. जब हम इनको इनके एलिमेंट से मल्टीपल कर देते हैं या इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं विद यूजिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन. दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव. देन देयर आर द कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट. वो कोफैक्टर हो जाते हैं डिटरमिनेंट के. ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वी गिवन दैट डिटरमिनेंट प्रूव दैट.
मीन्स मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन रहेंगे वो प्रूफ दैट से क्वेश्चन रहेंगे एंड बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड द प्रॉपर्टी मीन्स एलिमेंट्री ऑपरेशन और प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अपने को डिटरमिनेंट को प्रूव करना है। वी गिवन दैट क्वेश्चन 1 1 1 y z y plus z z x z plus x x y x plus y equals to x minus y y minus z and z minus x. It means we given that the determinant in the form of the left hand side. Left hand side के form में determinant अपने को given that है. Right hand side में अपने को prove करना है कि determinant की जब हम value find करते हैं तो ये value मिलती है x minus y, y minus z, z minus x. We solve the left hand side of the determinant. Now we solve this question of exercise 4.2. Prove that means this is the determinant. ने को ये चीज प्रूफ करनी है। प्रूफ करने के क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन में आंसर के अकॉर्डिंग अपने को ऑपरेशन यूज करनी है। इट मींस फर्स्ट वी फाइंड द फैक्टर x minus y, second y minus z and z minus x. We solve its left hand side and we use elementary operation according to this answer. Means x minus y चाहिए। x minus y means कैसे ऑपरेशन यूज करेंगे अपने को x minus y फाइंड हो जाए। we don't use the operation in the column. कॉलम में हम ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते, अपने को ऑपरेशन ओनली फॉर रो में यूज करनी है। फर्स्ट x minus y, then we change, first we change r2 means जो सेकंड रो के एलिमेंट है उसमें चेंज करना अपने को कि r2 के एलिमेंट में जब चेंज करेंगे ना r2 is converting r2 minus r3 means r2 को चेंज करेंगे, r2 के एलिमेंट में से r3 के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। इट मींस z प्लस का x minus y minus z, z to z cut, then we get x minus y. We check this. This is the first operation. And the second we use another operation and we use other operation. R1 is changing because in the second row changes, then we don't use R2. R1 is changing R1 minus R3 means R1 में जो changes करना है वो R1 minus R3 के according change करेंगे, but we use this operation and this operation. Okay, now we using the elementary operation. First R1 is changing R1 minus R3 means R1 के एलिमेंट में से R3 के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 minus 1 0 yz minus xy, then y is common and z minus x. Similar in this case y plus z minus x minus y, y से y cut, then we write z minus x. Okay, means y plus z minus x minus y, y से y cut, then z minus x. We use this operation. Next we use this operation. R2 is changing R2 minus R3. We write this first and this second. Means हम इसको first इसको second लिख सकते हैं. No change and no affected the solution. Solution पे इसका कोई effect नहीं होगा. And next R2 is changing R2 minus R3, 1 minus 1 0 and zx minus xy. Then x is common and z minus y, and in this case x to x cut, then z minus y and 1 x y x plus y. In this we use two operation. Now we take common. We take common means फर्स्ट रो से अपने को कॉमन क्या मिल रहा है? z minus x from R1
z minus y from R2 means R1 से z minus x कॉमन होगा, R2 से z minus y कॉमन होगा, then we write z minus x and z minus y and we use 0 0 1 y x x y and 1 1 x plus y. Okay, now we expand the determinant where in which row we get to maximum zeros, means अपने को expand करना है जिसमें maximum 0. In the column C1 में 2 element are 0 and third element is 1. Then we expand determinant by C1 means C1 से इसको हम expand करेंगे. Then we write z minus x, z minus y and we use curly bracket. Expand the determinant with the first column, then element of the column is shaded and this row is also shaded and we get a subdeterminant. This is the 1 and we get subdeterminant y x 1 1. Okay, curly bracket of we take common minus from this factor and this factor, we get answer in this format. अपने को आंसर इस फॉर्मेट में चाहिए तो x minus y minus z होना चाहिए, z minus y है तो फर्स्ट वी टेक कॉमन माइनस मींस माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा y minus z and z minus x, this is the z minus x, no problem, and y and x we get y minus x. We also take a negative common from this factor, then minus and minus is plus, x minus y, y minus z and z minus x. This is the right hand side of the determinant, means ये determinant की right hand side होगी. इस टाइप से अपने को प्रॉपर्टी और एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होती है वो यूज करके किसी भी क्वेश्चन को हम सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हैं या क्वेश्चन को इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सोल्व करना है. नेक्स्ट वी सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2. आई टेल सम प्रॉब्लम्स टू दिस क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, मींस अपने को डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है. वी गिवन ए डिटरमिनेंट 0 a square b a square c b square a 0 b square c c square a c square b and 0. Okay, find the value of this determinant. First we take the common from this column. A square is common from C1, b square is common from C2 and c square is common from C3. Means C1, C2, C3 से अपने को कॉमन लेना है. Then we get a square, b square, c square. A square is common from C1, b square is common from C2, c square common from C3. Then we write 0, b, c. A 0, c, a, b 0. Okay, and now we apply the elementary operation from C1 C2 is changing C2 minus C3. C2 में से C3 को subtract कर दो, then this element is also 0 and we expand the determinant. Okay, and another question of exercise 4.2. we given a determinant of order 3 into 3 1 omega cube omega square omega cube 1 omega omega square omega and 1. Find the value of this determinant. Omega is the cube root of a unity, means omega जो है वो unity का cube root है. It means in this determinant we use 1 plus omega square equal to 0.
this is the fundamental, and omega cube equals to 1, means omega cube equals to 1 plus omega square equal to 0, omega की power 4 equals to omega. Okay, when we solve this determinant, we use this property, and this property. We using the elementary operation and by using the property. In the next term, we complete the exercise number 4.2 and we solve its example and miscellaneous exercise question. This chapter is completed in next topic, next part.